सो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर हमने कल इक्विलिब्रियम के टाइप्स ऑलरेडी देखे थे, है कि नहीं? Types of equilibrium. We already seen that there are three types of equilibrium. One is the stable equilibrium, the second one is the unstable equilibrium, and the third one is neutral equilibrium. और उसका एक एग्जांपल भी हमने देखा था already last time. But now in this lecture we will see some more examples of these three types of equilibrium, so that we can just make this concept more clear. And then we'll go to the concept of center of mass once again. Okay, so this is what we have discussed last time. Here we can just see that the equilibrium is of three types, as we have already seen. The first is the stable equilibrium, in which the body just returns back at the same point even if it is disturbed slightly from its equilibrium position, and that's why it's called as the stable equilibrium. On the other hand, in case of an unstable equilibrium, the body doesn't return back to the same point once again, but actually it moves away from this equilibrium point and never return back to the same point again. And this is actually called as the unstable equilibrium. And third one is the neutral equilibrium. As we can see it in the diagram, that whenever the ball is kept on the flat floor like this, then we can just say that if suppose the ball is just disturbed and suppose placed at is another point anywhere, then it will remain at in equilibrium in that case also. So तीनों cases में वो equilibrium में रहेगा बिल्कुल. So this type of equilibrium is actually called as neutral equilibrium. Yes, and also we have just seen that the condition that the summation of all the forces acting on the body is equal to 0. This condition is satisfied in all these cases, no doubt. तो ये जो condition है वो तीनों equilibrium के condition में satisfy होता है, क्योंकि equilibrium का meaning ही वो है कि the body is going to be in equilibrium. That means the vector sum of all the forces acting on the body is going to be 0, no doubt. तो वो तो ठीक है, but अब यहाँ पे इसमें हम देखा कि in the first case the body just is going to be in stable equilibrium. The second case में body is going to be in unstable equilibrium, and in the third case we can see that the body is going to be in neutral equilibrium. Okay, now let us talk about the second example of the same. अभी हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसमें यही बात फिर से डिस्कस करेंगे कि how the stable equilibrium and unstable equilibrium and neutral equilibrium are just different from each other. Yes, just consider a flat surface once again. फिर से एक बार हम एक flat surface consider करते हैं. Okay, ये एक flat surface है यहाँ पे, ये भी एक flat surface है, और यहाँ पे भी एक flat surface हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, सो अभी इन फ्लैट सरफेस के ऊपर हम एक रॉड रखने वाले हैं. ठीक है, yes, let us take this flat surface slightly at this point here. Okay, just because, see here, suppose there is a rod like this, and suppose this rod is just suspended from this point here. तो ये रॉड जो है तो वो ऊपर वाले पॉइंट से एक सस्पेंड किया है. इमेजिन करो ठीक से कि ये जो है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ रिजिड सपोर्ट. कभी एक ये रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे, जस्ट लाइक अ रूफ. मान लो एक रूफ के जैसा ही एक सपोर्ट है यहाँ पे, और समझो कि यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया है. दिस इज द स्ट्रिंग हियर which is attached to the rod at this particular point, and hence the rod is just suspended at that particular point here. तो ये पॉइंट के साथ इसको हमने बांध के रखा है. ठीक है, ये एक पहला सिचुएशन हमारे पास है.
दूसरा सिचुएशन हम देख सकते हैं कि अगर सपोज वी हैव द सेम रॉड एंड इट इज केप्ट ऑन द सरफेस लाइक दिस। ओके, ये इस तरह से यहाँ पे ये सरफेस पे रखा हुआ है। So this is the second situation, you can say. And in the third situation, the same rod will just be kept horizontally like this and kept on the surface in this way. Okay. अब देखो ये तीनों सिचुएशंस में अगर देखते हैं तो होता क्या है ना कि इसको इस सिचुएशन में अगर इस रॉड को हम थोड़ा अगर डिस्टर्ब कर देते हैं इसके ओरिजिनल पोजीशन से, अगर हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा अगर उसको इस तरह से अगर टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, and just understand and just put it in the chat box what will happen. This rod will just come back to its original position. But here in this case, if suppose this rod is just turned through some angle and just disturbed slightly and like this here, what will happen in this case? The rod will just go on falling down and it will just fall down on the earth. तो यहाँ पे ये surface के ऊपर वो पटक जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इस केस में अगर इस रॉड को हम थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब करते हैं तो द रॉड विल जस्ट स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, इस तरह से वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा एंड आफ्टर सम टाइम इट विल जस्ट बिकम पैरेलल once again to this original position. मतलब that means it will just come back to its original position once again after performing some oscillations as it in the this case here also. यहाँ पे भी वही हो रहा था कि अगर इसको हमने थोड़ा इस तरफ अगर प्रेस कर दिया तो because of the gravitational force and because of this concave surface it will just pull down this and it will just oscillate like this few times and then after some time it will just go on oscillating and just come back to this main position here at this point. That means after some oscillations the body will just come back to its mean position finally. That is going to happen in this stable equilibrium, and the same thing happens here in this case also. But in the case of unstable equilibrium this never happens. In case of unstable equilibrium, if the body is disturbed slightly then it will get disturbed more like this. तो इस बॉडी को अगर हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया तो वो और ही ज्यादा डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से वो उस पॉइंट से और ही दूर दूर जाता रहेगा और कभी वापस नहीं आएगा। तो सेम वैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि if this rod is just disturbed slightly and then it will just go on falling and it will just fall down increase with the increasing highest speed and here in this way. So it will just fall down on the surface at this point here. तो ये होता है, तो that's why it's called as the unstable equilibrium. So इस तरह से ये जो रॉड है तो ये रॉड को जब हम यहाँ पे इस तरह से सरफेस पे रखेंगे तो तब तक वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ऐसे इक्विलिब्रियम में है जो उसको थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब कर दो तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो रॉड है दिस इज गोइंग टू बी इन अभी इसमें ऐसा इमेजिन करो कि सपोज दिस रॉड इज देयर इन दिस स्पेस वेयर देयर इज नो gravitational field at all and the rod is just kept like this. So if you just put it here in this way then it will just remain in equilibrium because no force will be acting on it. If suppose we just turn it or disturb it slightly and like this, keep it like this, it will remain like this, like that only forever because it is going to be in space. तो वो स्पेस के अंदर है तो स्पेस में होने की वजह से उसको कुछ भी करो कैसा भी रखो उसको वैसा ही वो रहने वाला है. So this type of equilibrium is again called as the neutral equilibrium, which is the third type of equilibrium. Okay. Now we can just understand one more example. Yes. Suppose इन्हीं तीनों का हमको और एक एग्जांपल देखना है. Okay, as a third example, we can just consider magnet and just keep it in magnetic field. Now, let us create a magnetic field first of all.
तो इमेजिन करो एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे. Yes, suppose this is the magnetic field which is from left to right like this. Okay, this is the magnetic field. Okay, so which is directed from left to right in this way. Okay, and suppose that we keep a magnet in this magnetic field. Okay, the magnet को अगर हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, मैग्नेट तो वैसे नॉर्थ साउथ पोल का बना हुआ होता है. Let us consider this arrow as a magnet. Okay, इस एरो को ही हम मैग्नेट मान लेंगे. इसका ये जो पॉइंटेड कॉर्नर वाला जो एंड है तो उसको हम नॉर्थ पोल कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, और ये जो उल्टा वाला एंड है उसको हम साउथ पोल कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो इफ सपोज दिस मैग्नेट इज केप्ट इन दिस वे हियर. Okay, and suppose that this magnet is kept like this, so we can just say that this magnet is going to be in the stable equilibrium, because just I will explain. And suppose that this is the another magnet, but it is just turned through 180 degree like this. उल्टा रखा हुआ है इसको, इस तरह से हमने इसको रख दिया है. तो ये सेकेंड केस या सेकेंड एग्जांपल वी कैन जस्ट से. एंड तीसरे केस में हमने एक ऐसा मैग्नेट रखा लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है. ये मैग्नेटिक फील्ड की कोई जरूरत ही नहीं है. We have just kept it outside the magnetic field like this. So this magnet is kept outside the magnetic field anywhere in this way. Okay, magnetic field is at this point here, and the magnet is kept at this point where there is no magnetic field at all. So we can just see that in the first case, this magnet is going to be in stable equilibrium. Why? Because if suppose this magnet is just disturbed like this, थोड़ा भी इसको disturb करेंगे, then it will just oscillate like this and you will just come back to the mean position and will remain parallel to the magnetic field once again like this. So it will just come back its with its axis parallel to the magnetic field. तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके आएगा और ऐसे ऐसे ही पोजीशन में वो हमेशा के लिए रहेगा. ठीक है, इट विल रिमेन एज इट इज फॉरएवर. ओके, बट इफ वी जस्ट थिंक अबाउट दिस मैग्नेट हियर, इस मैग्नेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नाउ इन दिस पोजीशन मैग्नेट इज इन इक्विलिब्रियम, नो डाउट. it will not move at all. But if you just see, if suppose it is disturbed slightly, अगर इस मैग्नेट को हमने थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे कर डिस्टर्ब कर दिया, तो immediately what will happen is it will just flip like this and will just turn through 180 degree and will just oscillate sometimes and just come back to this mean position once again like this here. So that's why we can just say that those magnet when it was like this in 180 degree angle turned like this here, it was in unstable equilibrium. This can be supposed to be the unstable equilibrium of this magnet here. ये unstable equilibrium कहलाता है, but ये जो है ये stable equilibrium कहलाता है. So हमेशा ये बात याद रखो कि body always tries to be in stable equilibrium, and it can be means made to forcefully. It can just attain unstable equilibrium, but if suppose it is disturbed slightly from that unstable equilibrium, then it will just attain the stable equilibrium. ये भी हमको समझना है.
And if suppose magnetic field is already not there, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है वहां पे, तो उस मैग्नेट को कैसा भी रखो वो वैसा ही रह जाएगा. अगर सपोज इसको ऐसा रख दिया वैसे ही रहेगा, ऐसा कर दिया वैसे ही रहेगा, ऐसा अगर कर दिया तो वैसे ही रहे, वैसे भी वो स्टेबल ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है ना वहां पे. अगर ऐसा भी कर दिया तो भी वो ऐसा ही रहेगा. तो जैसा भी उसको टर्न करेंगे तो वो वैसा ही रुका रहेगा. इट विल नेवर ऑसिलेट और नेवर टर्न एंड नेवर वर्क ऑन इट्स ओन एनीवेयर. That's why it is called as a neutral equilibrium. So all these three examples just make it clear that what is stable equilibrium, what is unstable equilibrium, and what is neutral equilibrium in this way. So here in this case, we can just see that the all these three cases, if we just compare, a comparative study अगर हम करेंगे यहाँ पे ठीक से, तो पता चलता है कि stable equilibrium में क्या होता है, the potential energy of the system is always minimum. Remember, there is a minimum potential energy of the surface of the body, and here in this case the potential energy of this body is actually going to be maximum. Even if the force acting on the body is zero, but still the potential energy is going to be maximum actually. Remember, and that's why it's called as the unstable equilibrium. Just wait. Okay, so this is the major difference point between stable equilibrium and unstable equilibrium, which we can see that in case of the stable equilibrium, the potential energy of the system is minimum, whereas in case of an unstable equilibrium, the potential energy of the system is going to be maximum. Remember, and in case of the here in case of the neutral equilibrium, the potential energy is constant. We can just say. See here, you can just understand this concept by observing these two examples here. तो यहाँ पे ये जो दोनों examples है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस बॉल को अगर हमने यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब किया और यहाँ पे लेके जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी विल जस्ट बी राइज्ड, है कि नहीं. यहाँ पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा. इवन इस तरफ भी लेके जाने से क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ेगा जरूर. But when the ball will be at this point only, then at that point only, its potential energy will actually be minimum. We can just say here. But in this case here, we can just say that the potential energy of the ball will be maximum, because if the ball is just disturbed and just travels in this direction here, it will just go down, and that means its potential energy will decrease in this case. Even if this ball is just moving in this direction here, the potential energy of the ball also will decrease. And that's why we can just say that the potential energy is maximum when the body is there and at the unstable equilibrium especially. And when the body is going to be in the neutral equilibrium, its potential energy cannot be said to be either maximum or minimum. It is neither maximum nor minimum, because if we just move the ball along this surface here, then the height is not going to change. That means height is not going to change, means potential energy is not also not going to change. So potential energy is neither maximum nor it is minimum. Even in this case also, we can just see, if suppose the this body is just turned like this, so center of mass of this body will just get lifted up like this. And that's why whenever the center of mass gets lifted up, that means the potential energy will increase. That means the body has a lowest potential energy in this position only. Because if we just see here, if the location of center of mass is recorded here, so this is the center of mass of the body, correct? When the body will just tilted, the center of mass will just move either in this direction at this point here, or it may move at this point here. In both of the cases, the center of mass is moving upwards, which will increase the potential energy. That means the body has a minimum potential energy at this level here. And that's why we can just say that in case of the stable equilibrium, the body has a minimum potential energy. But in this case, if we just see, the potential energy of the body is going to be maximum, because if this rod is turned, then the potential energy of the center of mass will just decrease, even if the rod just moves in this direction, or if the rod just moves in this direction. कौन से भी डायरेक्शन में वो जाने दो, वो सेंटर ऑफ मास उसका नीचे ही जाने वाला है. और नीचे जाने का मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने वाला है. That means at this unstable equilibrium position, the body has the highest amount of potential energy. And that's why we can just say that in case of unstable equilibrium, the potential energy is going to be maximum.
And in this case here, if suppose there is no gravity at all, then the rod doesn't have any potential energy, or we can just say that its potential energy is zero, which is constant. Even if the rod is placed at any point, the potential energy is going to be constant, no doubt. And ये भी उसका ही example है, ठीक से हम देख सकते हैं आराम से कि when the magnet is kept like this, its potential energy is minimum because the magnet will try to remain in this position always. But if suppose the magnet is turned like this, अगर उल्टे डायरेक्शन में इस मैग्नेट को हमने इस तरह से टर्न कर दिया, तो इस टर्न करने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ हमको वर्क डन करना पड़ेगा, and that work done will just get stored in the magnet in the form of potential energy, and that's why we can just say that the potential energy of the magnet in this position is going to be maximum, whereas in the position of stable equilibrium, in which the magnet is going to be in the same direction as that of the magnetic field, in that case the magnet will have its potential energy to be minimum like this. And here if we just see in the third case, if since there is no magnetic field, there is no potential energy of the magnet, and that will remain constant. That will be neither maximum nor it is minimum. So this is basically the difference points between the stable, unstable, and neutral equilibrium here. Yes, now let's move to the next topic in this chapter, that is about the center of mass and center of gravity, जो हमने already discuss किया था last time, but उसमें देखो हमने दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, सभी को याद है सर ठीक से? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. Okay, if we have two particles of masses m1 and m2 respectively, then we can just find out the location of the center of mass of that two particle system by using the special formula. But there is a special technique to find out the center of mass of two particle system actually, which we can just learn in this session now. Suppose there are two masses. Okay, this is suppose the first mass, you can just say m1, and suppose there is another mass, suppose m2. Okay, maybe that it's somewhat different size. Okay, now let us suppose that these two masses are just at the distances r from each other. तो इनके बीच में का जो डिस्टेंस है तो वो हमने मान लिया है r, ठीक है? तो अगर r इतने डिस्टेंस पे वो है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो वो निकालने के लिए हमने एक सिंपल सा लॉजिक यूज किया था कि इफ सपोज देयर इज अ रॉड लाइक दिस, अगर इस टाइप का एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर अगर हम इन वेट्स को बैलेंस करते हैं, ये तुमने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया होगा मे बी 10th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में. देखो ठीक से एक इस टाइप का रॉड लिया जाता है या जस्ट मीटर स्केल लिया जाता है, मीटर स्केल, जिसके ऊपर जो मार्किंग्स है सेंटीमीटर के मार्किंग्स वहां पे होते हैं. तो इस तरह से ये सपोज मीटर स्केल है और सेंटीमीटर मार्किंग यहाँ पे है इसके ऊपर. और अगर सपोज हमने इसके ऊपर इसको अगर सपोज बीच में बिल्कुल सेंटर पे अगर सपोर्ट कर दिया, इस तरह से सस्पेंड कर दिया इस तरह से, और अगर हमने इसके ऊपर दो वेट्स अटैच किए, एक वेट यहाँ पे अटैच किया, सपोज यहाँ पे एक पैन अटैच करके, ये m1 इसका वेट होगा, और यहाँ पे एक दूसरा वेट अटैच किया जो कि थोड़ा छोटा है, सपोज m2 उसको हम बोल सकते हैं. Yes, so what happens is the heavier weight has to be put closer to the center, and at the same time lighter weight has to be put away from the center, and then and only these two weights can balance. तो यहाँ पे ये बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है, द मास ऑफ दिस फर्स्ट वेट and the distance of that weight from the center must be exactly equal to the mass of second weight, and product of mass of second weight and the distance of that second weight from the center, like this. So when these products become equal, that means we can just say this m1 into r1 should be exactly equal to m2 into r2.
When this condition is actually satisfied, then and then only this rod can just get balanced at this point here. तो यहाँ पे वो बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि जितने डिस्टेंस पे ये m1 काम कर रहा है, तो उस डिस्टेंस का और इस मास m1 का प्रोडक्ट तो इक्वल होना चाहिए जितने डिस्टेंस पे ये m2 काम कर रहा है उस डिस्टेंस का और इस मास का प्रोडक्ट, like this. Sometimes this m1 is also called as the effort, and this r1 is actually called as effort arm. Effort arm इसको बोलते हैं. You must have been heard these words in 8th standard. And this m2 is actually called as a load, whereas this r2 is actually called as load arm. And balancing condition, which is called as the principle of moments, actually principle of moments, which tells us that the effort arm, or we can say just effort into effort arm, is equal to the load into load arm. ये सुना है सभी ने? ठीक है. So this is the principle of lever principle भी बोलते हैं इसको. ठीक है, lever इसी principle पे काम करता है. तो effort into effort arm is equal to the load into load arm. This is the main principle here for the balancing. तो ये रॉड इसी पॉइंट पे बैलेंस होगा जहां से दोनों मोमेंट्स, अब ये m1 जितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और ये m2 जितना भी मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस इक्वल, ऑपोजिट तो ऑलरेडी है, वो अगर इक्वल भी बन जाए तो वो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो बनेगा. दैट मींस द टॉर्क विल बिकम जीरो, एंड इन दैट केस वी कैन जस्ट से दैट the rod will be in equilibrium. That means it will not turn at all. So same way, same case is to be applied here. Same logic is to be applied here. Suppose this is going to be the center of mass. Actually, center of mass is always closer to the heavier body. Remember. So ये suppose heavier body है, इसलिए इसके नजदीक ये center of mass रहेगा. So let us consider this C as a center of mass, and the distance of this first point of mass m1 from the center of mass is actually going to be r1 here. तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? r1. ओके. और ये जो बचा हुआ दूसरा डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं r2. ओके. This is actually going to be r2. We can just denote this by r1 and r2, and this total distance is actually going to be r here, and these two masses are going to be m1 and m2 actually. So here we have applied that this m1 into r1 is actually going to be equal to m2 into r2. ये इक्वेशन सॉल्व करके हमने r1 और r2 दोनों के वैल्यूज डिराइव किए थे लास्ट टाइम. We are not going to repeat it that again here in this lecture, but what I want to make sure here is that we have to see this from a different approach. इसको हमको एक थोड़ा सा अलग अप्रोच से देखना है. इसको हमको इस तरह से देखना है कि we can just say that r1 upon r2 is actually going to be equal to m2 upon m1. करेक्ट है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि r1 upon r2 ये जो रेशियो है ये एक्चुअली m2 upon m1 के बराबर है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम वर्ड्स में इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि the center of mass of two particle system always divides the line joining these two masses in the inverse ratio of their masses. मतलब r1 is to r2 is the ratio of distances of center of mass from m1 and m2, right? So this ratio is actually equal to the inverse ratio of the masses. मतलब क्या? अभी देखो masses का ratio कितना है? masses का ratio है m1 is to m2. बट यहाँ पे m1 upon m2 नहीं है, यहाँ पे m2 upon m1 है, which is called as the inverse ratio of masses. So what can we say in words is, we can just type it here. ये statement जो है वो हमको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि center of mass of two particle system divides
the line joining them in the inverse ratio of their masses. देखो ठीक से पढ़ो एक बार ये लाइन ठीक से. What we can say here is the center of mass of two particle system always divides the line joining them in the inverse ratio of their masses. What does it exactly mean is this R1 upon R2 is equal to M2 upon M1. यही उसका मैथमेटिकल मीनिंग है या तो ठीक से. और इसको यूज करके हम इस ओरली ये निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स का कहाँ पे होगा. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर सपोज यहाँ पे एक मास है जिसका जो कि 5 किलोग्राम का है, ठीक है, 5 किलोग्राम का एक मास है यहाँ पे, और वहां से एक दूसरा मास है जो कि सपोज 7 किलोग्राम का है, ठीक है, 7 किलोग्राम. और इनके बीच में अगर मान लो कि एक सपोज 60 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस है, 60 सेंटीमीटर. यस, how can we get the position of center of mass? Where is the location of center of mass? How can we just try to find out? तो उसके लिए हमको ये देखना है कि what is the ratio of masses. masses का रेशियो कितना है? 5:7. but what we want is we want inverse ratio, करेक्ट है. तो what is the inverse ratio? इसको अगर हम इनवर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7:5 मिलेगा. बिल्कुल. तो अभी 7:5 इस रेशियो में हमको बांटना है इस 60 सेंटीमीटर को, जो कि टोटल डिस्टेंस है. That means this 60 centimeter has to be divided into two parts whose ratio is going to be 7:5 like this. And how can we do it? So उसके लिए भी एक last time मैंने सिखाया था एक simple सा टेक्निक हमको याद रखना है कि when we are to divide this 60 into two parts whose ratio is known, that is to be 7:5 suppose. So what we have to do is we have to find out the first ratio. First ratio will actually be 7 divided by 7 plus 5. मतलब फर्स्ट रेशियो मिलने के लिए हमको क्या करना है? इस 7 को इस 7 plus 5 से डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, जिससे हमको फर्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा. और सेकंड वाला नंबर मिलने के लिए क्या करना है? 5 को डिवाइड करना है 7 plus 5 से और उसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, जिसको हमको डिवाइड करना है. तो देखो सेकंड रेशियो हमको मिलेगा 5 upon 7 plus 5 into 60 once again. That's it. So if we just try to find it out, then how much it will be? Actually it will be 7 upon 12 into 60. Or how much it is? Actually it is 35, right? 35. And in the same way here, if we just try to find out this 5 upon 12 into 60, so 12 5s are 60 and 5 5s are 25. So we can just get this 25 as a final distance here. Getting this? So what we have to do is 60 has to be divided in two parts whose ratio is going to be 7:5. That's it. तो हमको रेशियो में डिवाइड करने के लिए क्या करना है? सिंपली ये फर्स्ट पार्ट अपॉन द टोटल मल्टीप्लाइड विद दिस 60. देन अगेन द सेकंड पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय दिस टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस 60 वंस अगेन. दैट इज वी हैव टू डू. अगर ये टेक्निक आपको समझा है ठीक से तो जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, और इफ वी हैव सम डाउट then you can just put it in the chat box. If you have understood all these things, then you should be able to do the next sum, which I am going to give now. See here, there are two masses. Suppose the first one is 48 kilogram. The second one is suppose 36 kilogram. Okay, and the line joining these two is going to be almost 112 centimeter long. Okay, we want to find out where is the center of mass going to be. How can we get that? Find the location of center of mass from this 48 as well as this 36. Means R1 and R2 कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. What is the distance of center of mass from the 48 kilogram and what is going to be the distance of center of mass from this another
that mass. That means 36 kilogram. Put it in the chat box. See here, what is the ratio of masses? Can you find out? 48 is to 36. ये ratio कितना हो गया? ये ratio हो गया 4 is to 3. Do you agree with this? 4 is to 3. But this is the ratio of masses. Actually, we want the inverse ratio of masses, right? So we can just get it as 3 is to 4. ये हो गया inverse ratio of masses. And we have to divide this 112 into two parts, one of which, both of which must be in the ratio 3 is to 4, like this. Yes. 48 or 64. Very good. We can just see here 112 को हमको डिवाइड करना है, बराबर? तो 112 को ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो फ्रैक्शंस के साथ. दो फ्रैक्शंस, ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे? तो पहला फ्रैक्शन जो है वो आएगा 3/3 + 4, मतलब ही वो बनेगा 3/7. दैट्स इट. एंड सेकंड फ्रैक्शन कैसे मिलेगा हमको? 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4, मतलब वो हमको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 7 again, this way. So once we work out this, we can just get the two distances, which are going to be the distances of this point, both of these points from the center of mass. So 7 ones are, and we know that this 7 ones are 7, and here 42 means 16 will be there. Okay, so वैसे भी हमको पता है 16 sevens are 112. Same case here also. यहाँ पे भी रेशियो है वो 16 आ जाएगा, no doubt. And if we just multiply this 16 by 3, then we can get this 48 centimeter as the value of R1 here. And the second one is going to be 16 fours are, which is 64. So 64 centimeter will actually be the value of R2 in this case here, no doubt. Okay, so that's it. That is what I want to make clear here. If you just take another example, suppose we have this 50 kilogram mass here on the one end, and suppose that there is another mass which is of 40 kilogram, like this, and suppose there is a distance of 180 centimeter between these two. Just try to find out the distance of center of mass from both of these. Try to find out R1 and R2 here. इस बाकी सब भी चैट बॉक्स में डालो फटाफट. समझ में आया कि नहीं ठीक से? देखो टेक्निक तो बहुत सिंपल है. It is simply we can just say that R1 निकालने के लिए हमको क्या करना है, R2 निकालने के लिए क्या करना है. Simply what we have to do is we have to divide this 180 centimeter in the inverse ratio of this masses. अभी देखो masses का रेशियो कितना है, सबसे पहले देखो तो 50:40. masses का रेशियो आ रहा है 5:4, करेक्ट है. बट वी हैव टू इन्वर्ट इट. तो इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4:5 आएगा. तो ये इन्वर्ट करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर उसको इन्वर्ट किया, उल्टा किया, तो वो 5:4 आ गया. अभी इस 180 को हमको डिवाइड करना है 4:5 रेशियो में. तो फर्स्ट पार्ट कितना आएगा हमारा, 4/9. ये 9 समझा कहाँ से आया, 4 + 5 मतलब 9. सो 4/9 into 180, दैट्स इट. और दूसरा पार्ट हमको मिलेगा सिंपली 5/9 into 180, which is actually yes. So 9 ones are 9 twos are, and here we can get this 20, and here also we can get 20. And if we just multiply this 20 by 4, then we can get this 80 centimeter. And here also we can just multiply this 5 by 4 and 5 by 20, and we get this 100 centimeter. That's it. So we can just get that 80 centimeter and 100 centimeter are those two parts of R, that is 180 centimeter here, which are in the ratio of 4:5, no doubt. That means this R1 will be actually 80 centimeter and R2 will be 100 centimeter in this way. So this is what we have to develop in today's lecture. ठीक है, तो ये टेक्निक हमको डेवलप करना था
याद रखो ठीक से. So we should be able to fluently find out the center of mass of two particle system at least. दो पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है तो वो हमको फाइंड करने आना चाहिए. और इन जनरल इफ यू जस्ट से दैट द masses are m1 and m2 respectively and suppose that the distance between them is going to be r suppose, तो इनके बीच में अगर r इतना डिस्टेंस अगर है तो क्या हमको क्या करना है, हमको इस r को डिवाइड करना है दो पार्ट्स में जिनका रेशियो m2:m1 रहने वाला है. तो r को m2:m1 रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है the first fraction or first part can be obtained simply to be m2 upon m1 plus m2 into r, जिसको डिवाइड करना है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, and r2 can be written to be simply equal to m1 upon m1 plus m2 into r. This is what we have just derived last time using some analysis. तो इस डायग्राम का एनालिसिस करके r1 r2 और r के बीच में का रिलेशनशिप यूज करके और ये r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 ये वाला इक्वेशन यूज करके हमने यही इक्वेशन डिराइव किया था लास्ट टाइम, जो कि हमको इसमें से ओरली मिल गया. तो इवन इफ वी जस्ट कैन फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन भूल जाएंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे जो हमने टेक्निक यूज किया इस एग्जांपल के अंदर, जो हमने टेक्निक यूज किया पूरा, तो वो आपको याद रखना है अच्छी तरह से. यू शुड बी एबल टू यूज दिस टेक्निक डायरेक्टली इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूली. अगर ये फॉर्मूले अगर भूल जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन टेक्निक आपको आना चाहिए. हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम मेनली. चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. Yes, so we can just stop here and continue the next part in the next lecture in Monday. Okay, thank you all of you.